Okay, welcome to the class, students. How are you all? So, students, today we are going to discuss about digestive system in human beings. Yes, as you all know that we are doing the life processes, है ना? हम लोग लाइफ प्रोसेसेस के ऊपर अलग अलग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं. तो आज हम लोग पढ़ेंगे digestive system in human beings. So let us start with the class, students. In that, first of all, we will see the nutrition in human beings, है ना? हमने ऑलरेडी देख लिया है कि द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके ऊपर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन द प्रीवियस क्लासेस. देन इन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, a good example for the plants as they are performing photosynthesis. For this, again, we have discussed in a good way and in a very much detail in our previous classes. Then the next was the heterotropic mode of nutrition. Yes, that means they cannot prepare their own food. वो अपना खुद का खाना नहीं बना सकते, वो किसी और plants या फिर animals पे depend रहते हैं for preparing their food, for getting their food, I will say. Yeah, यानी वो directly लेते हैं खाना किसी और plants या फिर animals, so they are dependent. In that we have discussed that amoeba, yes, the nutrition in amoeba, that we have already seen. Today we will discuss the nutrition in human being. So I can say that the mode of nutrition definitely हम लोग जब देखेंगे तो they are heterotrophs. But in heterotrophs also, students, we know that there are different mode of nutrition. Heterotrophs में भी हमने देखा है holozoic mode of nutrition था. Then it was parasitic mode of nutrition, saprophytic mode of nutrition, as well as symbiotic, है ना? So हम क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग होलोजोइक मोड पढ़ रहे हैं. अमीबा में भी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, it is showing the holozoic mode of nutrition. So in human beings also, if I say the mode of nutrition, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? इट इज डेफिनेटली होलोजोइक. यस, दैट मीन्स क्या होता है इसमें? फूड पहले इंजेस्ट किया जाता है, दैट मीन्स माउथ में ले लिया जाता है. यस, इट इज टेकन इनसाइड, और अंदर लेने के बाद में इट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, isn't it? This is nothing but a holozoic mode of nutrition. So holozoic mode of nutrition, it consists different steps. कौन से steps हमने देखे? हमने ये भी पढ़ लिया था. We have seen that there will be ingestion. Yes, then after ingestion there would be digestion. After digestion of the food is absorbed, so that is absorption. Yes, then क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद एसिमिलेट, यानी वो फूड को कहाँ पहुंचाया जाएगा? डिफरेंट सेल्स में, सो दैट यू कैन गेट एन एनर्जी फ्रॉम देयर. यस, सो एसिमिलेशन, एंड द लास्ट आई कैन से इट विल बी इजेशन. यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अनवांटेड फूड है, उसको रिमूव किया जाएगा. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजेशन. तो ये 5 स्टेप्स आपके होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रहते हैं, isn't it? So अमीबा में भी यही 5 स्टेप्स हमने देखे, ह्यूमन बीइंग में भी यही 5 स्टेप्स हो गए. बट जैसे हमने देखा कि अमीबा तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, सो दैट वाज अ सिंगल सेल, so there was not a proper complete system or different organs for digestion. But human being, it is a multicellular organism, isn't it? So definitely there is a proper system for that, and that is called as what? Digestive system, isn't it? So in humans, the nutrition takes place through digestive system. किससे हो रहा है? This is taking place through digestive system. This is a proper system. ये channel से ये system में फूड जिस तरह से हम बॉडी के इनसाइड जाएगा, it will enter through the mouth. Yes, and then all these steps, all the 5 steps will take place in different organs, and that completely, yes, वो सारे organs को साथ में लेकर आएंगे तो हम क्या बनता है? It forms a digestive system, isn't it? So
there could be a question that why there is a need of a digestive system there, isn't it? In my mind it comes, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि what is the need of digestive system? हम लोग भी क्यों नहीं directly food we can take inside and then in the mouth only we can digest? Is it possible? Yeah. Why this complete system is needed? Actually, students, the answer for that you can say that जो भी खाना हम खाते हैं, yes, it is very necessary that उसको क्या करना है, उसको हमको कन्वर्ट करना है इस सिंपलर फॉर्म में, और ऐसा फॉर्म जो कि हमारी बॉडी के सेल एब्जॉर्ब कर सके, यस, और एब्जॉर्ब करके इट कैन पास टू द डिफरेंट सेल्स थ्रू द ब्लड. Yeah, so that's why a complete, a proper system is needed. So the food that we eat must be changed into a soluble, absorbable form to get absorbed by the blood. That's why this digestive system is needed. Yeah. What happens when there is a digestion? And this digestion makes food soluble to be absorbed, है ना? इसीलिए ये डाइजेशन की जरूरत होती है और इसीलिए ये प्रॉपर सिस्टम जरूरत होती है. दैट इज कॉल्ड एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम. Got it? So what does digestion do? It breaks down the food stuff into diffusible form, or we can say absorbable form. But remember, they do it with the help of definitely enzymes. Yes, enzymes यहाँ पर बहुत important role play करते हैं, because जो breakdown of food होता है, it takes place with the help of enzymes. Got it, students? So now the next that we will discuss it is what is your digestive system? Okay, digestive system क्या है? So digestive system actually it consists of what? This digestive system, if I say, it consists of again two parts. इसको हम दो parts में divide करेंगे. कौन से दो part? पहला मैं लिखूंगी, one is your alimentary canal. Yes, it is alimentary canal. And the second we can say it is your digestive gland, isn't it? तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दोनों को मिलाएंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनेगा. Got it? Now what is there in the alimentary canal? Alimentary canal, it consists of what? Actually this canal is a very long, yes, muscular hollow tubular structure. Yes, बहुत लंबी रहेगी. Definitely it is supported by muscle, so it is a muscular hollow. Yeah, so anything can enter inside, and tubular structure around you can say 8 to 9 meter long. Yes, and coiled also. Got it? So this alimentary canal starts from mouth. कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है mouth से. It starts from mouth. Then what is there? Then there is an esophagus, stomach, intestine, and it ends where? It ends at anus. Yes, it ends at anus. So I can say the mouth, then esophagus, yes, stomach, then large intestine, small intestine, all this it will be there. So we'll just erase this anus here. Yes. Then there will be intestine. So intestine, maybe it will be small intestine, isn't it? Then large intestine, and then it ends at anus. This is about your alimentary canal. Okay. So it starts from mouth and ends at anus. What about digestive glands? There are some glands, students. Yes, ये glands क्या करते हैं? ये glands कुछ enzymes को secrete करते हैं, hormones को secrete करते हैं, जो कि digestion में help करेंगे. Yes, so they secretes some enzymes and hormones helping in digestion.
Now, which are these? What are these glands? ये कौन-कौन से glands है? Anyone? There is from the mouth only. If you will start, there is a salivary gland, है ना? So salivary gland is there. Then you can write it down pancreas. You can write it down liver. Yeah. Then in the stomach again you can have gastric glands and intestinal gland. Yes, these all are the important glands which are also a part of digestive system. So digestive system बोला तो सिर्फ माउथ स्टमक इंटेस्टाइन यही नहीं होता है, इसके अलावा आपको ये सारे भी इंक्लूड करना है, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड एंड पैनक्रियास, लीवर, ये सारी चीजें मिलाकर क्या फॉर्म होता है? इट फॉर्म्स अ डाइजेस्टिव system. Got it, students? You can see. Okay, yes, you can see this is mouth, yeah. Then this is the stomach. Then this is pancreas. Here the small one is gallbladder. Gallbladder का क्या काम है हम लोग पढ़ेंगे. I'll tell you that also. This is a liver. Then the large intestine. This is a small intestine. Small intestine बहुत ज़्यादा coiled रहती है, isn't it? And the rectum, and last is the anus, yes, which is the last part, or the digestive system ends at anus. Got it, students? So this was about the digestive system. Now इसके बाद में हम digestive system के हर एक part के बारे में one by one we will discuss that in detail. Got it? So which is the first part? If I start with the alimentary canal, my first part, okay, before the first part, now one more important things that we should complete. So that is nothing but the enzymes. As I told you that enzymes plays a very important role, है ना? In the process of digestion, क्योंकि enzyme क्या करता है? Food का breakdown करता है. So they are what? Enzymes, they are the biological catalyst, students. वो एक कैटलिस्ट है. कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट हमेशा कोई भी रिएक्शन को, आपने केमिस्ट्री में देखा होगा कैटलिस्ट रहता है ना, एनी रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, देन वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, isn't it? So it is an biologically field में जब वो चीज होती है तो हम उसको बोलते हैं biological catalyst. So enzymes are biological catalysts that help to break complex food molecules into simpler and smaller. है ना, जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स हम इंजेस्ट करते हैं उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और स्मॉलर फॉर्म में, ताकि वो हम एब्जॉर्ब कर लेंगे. यस, दैट so that our body can easily absorb it. Got it? That is a role of the enzymes. So what are the different characteristics of enzymes? General characteristics हम देखेंगे. We'll just go with that. Enzyme, it is a protein. Generally सारे enzymes जो ना प्रोटीन होते हैं. Just remember this thing, okay? And इसीलिए क्योंकि वो प्रोटीन होते हैं, they destroy by heating. बहुत ज्यादा हीट किया गया ना, बहुत ज्यादा हीटिंग रही, so they will destroy. Got it? That's so remember. And what is the nature? यदि कोई पूछेगा what is the nature of enzyme, you should always say that it is a protein. The enzymes are protein. Now, the enzyme speeds up a chemical reaction. Any reaction if you are is going on, any chemical reaction, enzyme का काम क्या है? उसको speed up करेगा, उसको fast करवाएगा. इंटरफेयर नहीं करता है वो रिएक्शन में, बस वो उसको फास्ट करवाएगा, वो उसको स्पीड अप करवा सकता है. गॉट इट? इट ओनली अफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. लुक, दिस इज इंपॉर्टेंट. ये सिर्फ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करेगा. अगेन यस, ये स्पीड बढ़वाएगा, उसका रेट अफेक्ट करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा बीच में जाकर कुछ भी. गॉट इट? Then it can be used again and again just like a catalyst. एक ही एंजाइम को हम बार बार भी यूज कर सकते हैं. Then it is specific in its action and only acts on a substrate. एंजाइम किस पे एक्ट करता है ना, जिस पे एक्ट करेगा उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट. हमेशा एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है. Yes, it works on the substrate and it is specific for its action. Got it?
कोई भी एंजाइम का कोई भी सबस्ट्रेट ऐसा नहीं रहेगा, देयर विल बी अ स्पेसिफिसिटी ऑलवेज, गॉट इट, एंड इट एक्ट्स ओनली ऑन द सबस्ट्रेट. देन enzymes are affected by pH, change in pH से affect हो जाएगा, temperature, isn't it? So it acts best at a particular pH and optimum temperature. Optimum temperature यानी temperature between 35 to 40 degree Celsius जो रहेगा वहाँ पर वो best रहेगा for its activity. Yes, so remember these are very general characteristics. Just go with this. आप उसको पढ़ लो, आप उसको दिमाग में रखो. इट इज नॉट डिफिकल्ट टू लर्न. यस, जस्ट I say 2-3 times if you will read, if you will take it properly in your mind, उसको समझ लोगे, then very sorry, it is very easy to remember. Got it? So go with the general characteristics of enzymes also. Now coming to the next part, that is the parts of digestive system. The first part, that is nothing but a mouth. Yes, the digestion starts from the mouth. So I can say the first part of digestive system is the mouth, from where the food enters. हम खाना कहाँ से खाते हैं? It enters through the mouth, isn't it? Now mouth, if you will see, students, mouth is having what inside it? There are teeth, and a daat hai, there is a tongue, then the jaw, it is supported by jaws, upper jaw, lower jaws, and a jaws hai. So, and then the floor, we can say the palates are there, isn't it? So all these things are there in a mouth. Now how we can say, or what happens in a mouth? Mouth में क्या होता है? One by one we will discuss that also. So the food has to be processed. जो food हम अंदर ले रहे हैं अभी माउथ में, yes, तो उसको प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, है ना? प्रोसेसिंग करना पड़ेगा यानी हम तो एक बड़ा सा टुकड़ा लेते हैं, we have to break it into smaller parts, isn't it? So what it is done? It is done by the teeth. दांत क्या करता है? When we chew it, when we chew the food for a properly, if we will chew it, the food, it will be broken into smaller particles. So we can say the processing of the food, it starts there in a mouth there, yes, so that it is converted into small and soft particles. This is done by the tongue as well as teeth. So tongue and teeth are two major parts of the mouth, I can say. Yeah, so first if I talk about tongue, yes, यदि हम tongue की बात करते हैं, so you all know the role of tongue. Yes, if I talk about tongue, yes, what is or how is the tongue? Tongue is, it is thick, muscular, isn't it? This is a muscular or not? As well as I can say that it is one of the sensory organ also. एक सेंसरी ऑर्गन भी है. कैसे? क्योंकि जो टेस्ट का सेंस है, इट इज डन बाय दिस टंग, isn't it? So the tongue is a thick muscular sensory organ where which is present at the floor of buccal cavity. We call it as a buccal cavity ना, माउथ को हम buccal cavity भी बोलते हैं. So it is at the floor of this buccal cavity, isn't it? Now if I am talking about the sensory organ, तो यदि मैं ये ऐसे इस तरह से टंग को शो करती हूँ, yes, if this is a tongue, so what can we say there? Yeah, the different parts there, है ना? So there are some taste buds. Yes, the taste buds are present. Taste buds are present on the tongue. So this taste bud क्या करते हैं? अलग अलग taste को identify करता है. We know that सबसे सामने का जो part है, it gives you the sweet taste, isn't it? Then after that, if you will see this part, it will give you salty taste. ये सब आपको पता होगा. Yes, after salty, the next part of the tongue, it gives you sour taste. And the last year यहाँ पर जो है वो आपको bitter taste जो रहेगा, वो आपको वो वाले पार्ट से पता चलता है.
So when you keep the food in front of the tongue, just at the tip of the tongue, the sweetness you can know about that. Yes. So this is done by the taste buds which are present on this tongue. Got it, students? Now, what is the role of this tongue? Tongue क्या करता है? The taste bud helps in tasting the food. Yes, it helps in tasting, I can say. Then tongue also helps in mixing the food. Mix करने में help करता है. Mixing of food. किसके साथ mix होता है food? Mixing of food with the saliva. In our mouth we have saliva, है ना? मुंह में पानी आता है जब हम खाना देखते हैं, when we see some delicious food in front of us, or we smell something good. Yes, the water comes in our mouth. So what is it? That is nothing but saliva. उसको हम क्या बोलते हैं? Saliva. तो जब भी हम खाना खाते हैं तो जो मुंह का ये जो saliva है वो खाने के साथ मिक्स होता है. कैसे होता है? It is with the help of the tongue. Okay, so it mixes the food with the saliva, that the food is swallowed. Yes, it helps in tasting, mixing of food with saliva and swallowing it. Okay, one more thing. Tongue also helps in students. Tongue also helps in speaking. Now I am speaking, there मैं बोल रही हूँ. Can you see that my tongue is also some way it is also going up and down in some words? So definitely tongue also helps in speaking. तो सिर्फ फूड को मिक्स करने में मदद नहीं कर रहा है, ये टेस्ट करने में मदद नहीं कर रही है, ये बोलने में भी फॉर द स्पीकिंग ऑल्सो इट इज हेल्पिंग. गॉट इट? दिस इज द मेन थिंग अबाउट द टंग. नाउ इन अ माउथ, what is the other thing? As I told you, saliva is present. Yes, so the saliva कहाँ से आता है? Saliva is produced by saliva, produced by what? Produced by the salivary gland. Yes, we are going to discuss. हम salivary glands के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो saliva जो mouth में आता है वो आता है salivary gland से. Okay, and the saliva, it contains enzyme. कौन सा एंजाइम होता है? It contains enzyme called as salivary amylase. Got it? ये जो salivary amylase है, it helps in what? It helps in digestion of starch. ये स्टार्च का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हेल्प करने के लिए जो salivary amylase present होता है in the saliva which is produced by the salivary glands. Yes, this salivary amylase और टाइलिन, इसको हम टाइलिन भी बोलते हैं एंजाइम को, it helps in the digestion of starch. That means what now? Can I say that the digestion of food starts from the mouth? हम बोल सकते हैं कि डाइजेशन जो है वो माउथ से शुरू होता है. यस, वी कैन से दैट. यू नो द टाइम वी च्यू द फूड, हम जितनी देर तक खाने को च्यू करते रहते हैं हमारे मुंह में, उतने ही टाइम में वो जो सलाइवरी अमाइलेस फूड में मिक्स होता है, और यदि वो फूड में स्टार्च है, देन इट स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग दैट स्टार्च. कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा. यस, कंप्लीटली डाइजेशन नहीं होगा बिकॉज फूड रिमेन्स इन आवर माउथ फॉर वेरी लिटिल टाइम. थोड़े समय के लिए रहता है ना, तो इन दैट टाइम द कंप्लीट डाइजेशन इज नॉट पॉसिबल. बट यस, वी कैन से दैट द डाइजेशन ऑफ starch starts in the mouth only with the help of salivary amylase. I hope this is clear. Yeah, one more thing you can add यहाँ पर with the tongue, students, you can also help one thing I have not written, you can write it down, that it helps in cleaning the food particles from the teeth. When we are eating, जब हम खाना खाते हैं तो कभी कभी food particles they stuck in the teeth. Yes, so we can take it out, like in that way we can do, and we can take it out from the teeth with the help of the tongue. So tongue also helps in what? Cleaning food particles
from the teeth. You can write that also as a use there. Got it? So this was little bit about tongue. This was little bit about the saliva. And the next thing that we will see here, what can you see here? Oh, a big mouth, है ना? बड़ा सा मुंह है, and that the open mouth is there. What you can see there? There is a tongue. ये देखो हमने देख लिया tongue है. Then I told you the palates, isn't it? Yes, so hard palate hai. This is a soft palate which is present in the mouth. And what are these things? These are the teeth, isn't it? So we are just going to discuss the next part, that is the teeth. Now they are also playing a very important role. Teeth bhi bahut important hai in our mouth. What are they doing? Yes, these are the hard structures. The tongue is a soft one. Na? So similarly, the teeth are the hard structure. Yes, hard structure present on where? Present on the bones of upper and lower jaw. Can I say that? Isn't it? So they are hard structure present on the bones of upper and lower jaw. Yes, what is the role of teeth? Teeth helps in, or it helps to cut what? It helps to cut the food, definitely. Yes, grind the food. Mixie का काम करता है, isn't it? Yeah, and also chew it. Yes, also I can say teeth also helps in speaking. Just like the tongue, you can also make here that teeth also helps in speaking. Got it? Now, these are the upper, this is the upper jaw and lower jaw, and the teeth are present. There are different types of teeth also, isn't it? You must have seen कि ये सारे teeth एक जैसे दिख रहे हैं क्या? Yes, is it similar? No, you can see these two teeth are different, then this is different, then these teeth are also different. So we can say that the mammal teeth are, students, write it down, mammalian teeth are heterodont. What are they? They are heterodont. Now, what is the meaning of heterodont? Heterodont का मतलब क्या है? That means different shape. Yes, that means they are having different shapes. So the mammalian teeth are heterodont. I hope ये वाला word आप याद रखोगे. Whereas we will see some other animals like, for example, I can say lizard. We can say, yes, other animals like lizard, then birds. They have the teeth, or their teeth we call them as homodont teeth. That means their all teeth are same. सभी दांत एक जैसे होते हैं. Yes. So some animals, the mammals, like mammals also, it has a heterodont, remember? Whereas the lizard, it will have a homodont. Now what is the meaning of heterodont? Different shapes of teeth. Homo means same, similar teeth. All the teeth are similar. Now if the different shapes of teeth, so what are the different shapes? Yes, one more thing you can write it down, that the teeth can be adult person or adult mammal, it has a 32 teeth, can we say that? Isn't it? So there the teeth can be a milk teeth. Yes, or the teeth can be permanent teeth. Milk teeth are for the infants, the young children, the small children. Yes, when the teeth starts to come, this milk teeth are 20 in number. This milk teeth falls, and then the next teeth which comes, they are the permanent teeth, and they are 32 in number, students. Yes, they are 32 in number. I hope this is clear. Yes. So now if I'm talking about this teeth,
हम लोग इसमें और एक चीज लिख सकते हैं कि now how this teeth could be there. So different teeth, if I'm talking homodont, so if it is a heterodont teeth, different shapes teeth, so they are like incisors. Yes, incisors, then canines, then premolars, and then molars. Am I right? Isn't it? So जो incisors है, incisors का कितने नंबर में रहते हैं incisors? Again there is a difference there. First we will see इनका काम क्या है. जो incisors है, यहाँ पर आप देख सकते हो incisors कहाँ पर दिख रहा है. ये जो teeth है, yes, they are the incisors. So what is the role of incisors, students? They are used for the cutting. Yes, they are used for cutting and biting. किसी भी चीज को कट करना है और बाइट करना है, so this incisors are used. Then after that there will be canines. उसके बाद के जो teeth है, ये साइड देखो, ये सामने का जो है ना, this is the incisor. Okay, then this two, it is a canine. Got it? So canines are teeth which are used for tearing. If you want to tear something, yes, you use this canine, isn't it? So front teeth are the incisors. उसके बाजू के दो teeth जो रहेंगे, they are the canines. Then adjacent to on the either side of the canines, I will say they are the premolars, जो हम बोलते हैं दाढ़ है, isn't it? So it is used for grinding and crushing. And then similarly the molars are there, they are also used for grinding and crushing. Yes, these are the you all, आप सभी को पता है, लेकिन just as हम लोग digestive system पढ़ रहे हैं, so basic things we are taking there again. Okay, so this is about the teeth. Now there could be a question that, ma'am, how this 20 the teeth are there in a 20 number, or I can say just a minute, I have changed the slide, just a minute. Okay, yeah, if I am saying that there are 20 in number and 32 in number, so what is the difference there? So आप लिख सकते हो यदि आपको लिखना है तो, और I can give you, चलो I will change the pen here, just a minute. Yeah, you can write it down, students. If I am talking about this incisors, canines, premolars and molars, we can write it down here only. In case of permanent teeth, yes, in permanent teeth and the milk teeth, yes. So the permanent teeth, for them the incisors are 2 in number, or I can say for the each way, yes. So we can say that 2 pairs. Here also milk teeth are also 2. Canines will be 1, milk teeth 1, then premolars 2. Premolars will not be there in milk teeth as such. Yes, and molars, there are 3 pairs. Here it is 2 pairs. In this 3 pairs, 1 pair is your wisdom teeth. Yes, यहाँ पर एक पेयर जो रहेगा wisdom teeth रहेगा. So ये जो है ना 3, I can write here 2 plus 1. So this 1 जो है 1 pair, it will be a wisdom teeth. हम बोलते हैं हिंदी में अक्कल की दाढ़, isn't it? We call it as a wisdom teeth. Why we call it as a akal ki daad or wisdom teeth, students? Because this teeth appears at an age of nearly 17 to 20 years. So when an adult it is formed, the human reaches a maturity. Yes, that age is suppose that, yeah, now the human has become a matured person, है ना? हम 17 से 20 साल के जब होते हैं उस समय में ये वाली दाढ़ आती है. दैट्स व्हाई वी से दैट इट इज अ विजडम टीथ. तब ये माना जाता है कि वो एज में हम समझदार हो जाते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ विजडम टूथ or wisdom teeth. I hope this is clear, students. So you can note it down, or you can make it the numbers in this way. If I am writing a 20 number, so you can write it down the formula like 2102. यहाँ ऐसे याद रख सकते हो 2102. So 2 incisor, 1 canine, 0 premolars, and the
2 will be the molar. And in case of permanent teeth, we can say what? Again, it will be 2, 1, 2, 3, isn't it? 2 incisor, 1 canine, 2 premolar and 3 molars. 3 molars mein 2 will be again molar and 1 will be the wisdom tooth. Got it, students? So these are the, look, you can see here, these are the 3 premolars. This is 2 premolar. These are the 3 molars. इसमें जो last रहेगा ना, the last one, it will be the wisdom tooth. Yeah. So always remember this thing. So this was about the teeth. I hope this is clear. Now we will see the next thing. We will see the structure there, students, the structure of tooth. So what is the structure of tooth there? First of all, you can say yes, now it is there. Crown, the first part I can say crown. So what is this crown? जो सबसे ऊपर रहेगा, ताज, है ना? So this is a dental crown. So the upper part here, part above the gum, जो बाहर दिखता है. Yes, that is called as a crown of a tooth. Then after that, the part which is inside, yeah, that is called as a root. So this is a part embedded in a cap-like socket of a jaw. उसके बाद में होता है इनामल. यस, इनामल है जो कि क्राउन को कवर करता है, जो बाहर की कवरिंग होती है हमारे दांत की, उसको हम बोलते हैं इनामल. इनामल, स्टूडेंट्स, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अ बॉडी. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. ये कभी पूछा जा सकता है. इनामल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अ बॉडी. रिमेंबर दिस थिंग. ये क्राउन को कवर करेगा. उसके बाद में इनामल के नीचे आता है आपका डेंटाइन. यस, इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ अ टूथ. डेंटाइन से क्या होता है? डेंटाइन से है ना, छोटी छोटी कैनाल्स पास होती है, कैनाल्स निकलती है, और कैनाल्स कहाँ जाती है? अंदर में साइटोप्लाज्म, इस टेंस में. ये और उसी तरह से वो पल्प की जो कैविटी है, डेंटल पल्प है, ये कैविटी पे इस तरह से पास हो this canals. Okay, so after dentine it is a pulp, that is a dental pulp. Dental pulp जो होता है ना, वो एक soft part होता है. This is a very soft part made up of connective tissue. So it is a soft connective tissue which contains a cavity. ये cavity को हम बोलेंगे dental pulp cavity. ओके, और ये कैविटी में क्या क्या रहेगा? देयर विल बी द ब्लड कैपिलरीज, नर्व फाइबर्स, लिम्फ वेसल्स, ये सारी चीजें रहेगी. गॉट इट? देन देयर इज अ सीमेंटम. कैन यू सी हियर? It is a bone-like structure again, and it covers and fixes the root in position. यानी सीमेंट कैसा काम करता है? घर में सीमेंट जब when there is a houses there, what is the cement doing? It is holding the thing ना. Similarly, here also the cement, it will fix the root in its position. It will hold that. Yes, so this is in general the structure of tooth. Now one more important part that you should remember is about a dental caries. आप सभी को पता होगा, आप सभी ने सुना होगा कि दांत सड़ गए. छोटे बच्चों के बहुत ज्यादा चॉकलेट खाते हैं, तो their teeth becomes very bad. There we say that the caries have been formed. Yes, or the tooth decay is there. So what is this? ये क्या है? ये क्यों होता है? And how we can prevent this? So what is this condition of tooth decay, students? It is a condition that causes gradual softening of enamel. Now you know what is enamel. You know what is dentine. आपको पता है? तो जो enamel और dentine है. Now enamel मैंने अभी आपको क्या बताया, students? That it is the hardest substance. अब ये hardest substance को soft करना शुरू कर देगा. Yes, ये condition ऐसी होगी जहां पर ये enamel को soft करना शुरू करेगा. कौन करेगा और कैसे होगा? ये कैसे होता है, स्टूडेंट्स? व्हेन वी ईट फूड. यस, डेफिनेटली आफ्टर ईटिंग फूड, आफ्टर सम टाइम वी ड्रिंक वाटर, है ना, हम पानी पीते हैं. देन वी क्लीन द माउथ अगेन बाय रिंसिंग. It is also done. Many people follow this thing also, that they will rinse the mouth and they try to clean it. But still क्या होता है, बहुत बार कुछ पार्टिकल, कुछ फूड पार्टिकल्स दांत में रह जाते हैं. They stuck in the teeth only. And if they stuck in a teeth,
yes, and it is there for a longer time. तो वहां पर बैक्टीरिया ग्रो होना शुरू हो जाते हैं. The bacteria starts to grow there. And what is the food for the bacteria? Bacteria needs sugar. तो हमारे फूड में शुगर तो रहती है ना, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च रहेगा. तो दे नीड दैट शुगर, so they will take that sugar from the food. Yes, and they will produce acid. वहां पर वो एसिड प्रोड्यूस करेंगे. और ये जो एसिड जनरेट होता है बाय द बैक्टीरिया, इट विल सॉफ्टन एंड डीमिनरलाइज द इनामल. इनामल के जो मिनरल्स रहेंगे उसको खराब कर देगा. yes, और उसको सॉफ्ट कर देगा. Got it? So it is done by what? It is done by the bacteria which releases acid. And how the bacteria reaches there? वहाँ पे bacteria कैसे पहुँच गए? Because the food particles are stuck in the teeth. Got it, students? So this masses of bacterial cells, you can see masses of bacterial cells together with the food particles stick to the teeth, they form a dental plaque. जब वो एक के ऊपर एक ऐसे जमा हो जाएगा वो पूरा, उसको हम बोलते हैं प्लाक बन गया. इन वो प्लाक में क्या रहता है? बैक्टीरियल सेल्स रहते हैं. यस, सो मेनी बैक्टीरियल सेल्स. किसके ऊपर? फूड पार्टिकल रहती है तो उसके ऊपर ये सेल्स इस तरह से जमा हो जाते हैं. यस, and they form such structures. This is called as a plaque or dental plaque. Got it? और ये प्लाक क्या करता है? टीथ के ऊपर बन जाता है. It covers the teeth. So the saliva that is produced in the mouth, it cannot reach the tooth surface. क्लियर है? देखो वो क्या कर रहा है? एसिड प्रोड्यूस कर रहा है. एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है कौन? बेस कर सकता है. सलाइवा बेसिक रहेगा, थोड़ा सा एल्कलाइन रहता है. वी विल डिस्कस अबाउट द सलाइवा, देन आई विल टेल यू. बट सलाइवा कैन न्यूट्रलाइज दिस एसिड. तो सलाइवा वहां पहुंच जाए तो वो ठीक कर लेगा, बट सलाइवा नहीं पहुंच सकता है क्योंकि बीच में क्या आ जाता है? ये प्लाक आ जाता है ना. So because of that, the saliva cannot reach the tooth surface to neutralize the acid. Now, how you can avoid this thing? हम इसको avoid कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जब भी हम खाना खाते हैं, that's why we say that ना, we should always brush the teeth. Yes, once in the morning after waking up and once before going to bed. ये हमेशा से हमको from the school days, from the nursery, from the KG1 we know this thing. Yeah, but do we follow this? हम follow करते हैं क्या? If not, you should follow that. As well as there is also a suggestion that after eating also you should just brush the teeth. So that what happens, if some particles are stuck in the teeth, they will be removed. Yeah. So this plaque, it will not be formed. Plaque बनेगा ही नहीं, plaque बनेगा ही नहीं, acids बनेगा ही नहीं. तो फिर there will be no problem in this case, isn't it? And if students, if this is untreated, suppose a plaque has been formed and if it is not treated, तो ये जो bacteria grow होते हैं ना, the bacteria can go inside also. From enamel से dentine से जाके pulp, you know, in the pulp there is a canal and then the pulp cavity is also there. तो वो pulp में अंदर जाकर, इस दांत के अंदर जाके अंदर में infection, they can make the infection also. Then what will happen? You have to remove the tooth. आपको दांत ही निकालना पड़ जाएगा, है ना? So we should not go till that part. To avoid that, a very normal thing it is to be done, that we can rinse the mouth and we can brush the teeth after the eating food. Got it? So what is a dental plaque, dental caries? What is a tooth decay? I hope this is very much clear. What is a plaque? ये समझ में आ गया आपको? So it is the bacteria that are growing. Got it, students? Yes. The next thing that we will see after mouth, that was the first part of the digestive system. The next is the pharynx. The pharynx, we cannot take it as a particular part there, but yes, the food enters through that. That's why I'm giving you. It is a very small funnel shaped chamber, students. Okay, which is located where? Which is located behind the oral cavity. Yes, यहाँ पे बस पीछे में locate होता है. And it communicates with the esophagus and trachea. माउथ के बाद pharynx है, then उसके बाद में वो किसके साथ communicate रहता है? Attached रहता है, it is with the esophagus and the trachea.
Yeah. So food enters into esophagus then. Now esophagus is also called as a food pipe. ये फूड पाइप ये यहाँ से ऐसे जाता है, isn't it? So it is a long muscular tube that carries food from mouth to stomach. Yeah, it is long muscular tube that carries food from mouth to stomach. Now food moves through this peristaltic movement. Esophagus में जब खाना जाता है वो ऐसा पाइप है ना? तो फूड कैसे अपने आप नीचे नीचे जाएगा? It is going through the movement. This is called as a peristaltic movement. Got it? Now what is this peristaltic movement? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन्हें हम बोल सकते हैं कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इस तरह से जो फूड पाइप रहता है ना वो ऐसे 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 होता है अपने आप। Yeah, so because of that, if suppose if food is here, if this is a food and then food is here, so this will contract relax, so in that way it will push the food in a downward direction। ऐसे करके food को वो push करके नीचे नीचे भेजेगा towards the stomach। that is the peristaltic movement, you can say that contraction and relaxation movements of walls of esophagus। Got it, students? So you can also write it down if you want. Peristalsis, it is the wave of constriction. It is a wave of constriction caused by the circular muscles। जो आपका esophagus रहेगा उसकी walls में circular muscles रहेंगे, they will make this wave of constriction, yes, which helps to push the food downwards। Got it? So remember, इन ईसोफेगस क्या हो रहा है? खाना सिर्फ माउथ से वो कैरी करके ईसोफेगस स्टमक तक पहुंचा रहा है। देयर इज नो डाइजेशन टेकिंग प्लेस इन द ईसोफेगस। रिमेंबर दिस थिंग, इन माउथ digestion starts, but in esophagus no digestion occurs। Yeah, it is just a passage। Then comes a stomach। Stomach एक J-shaped organ है। You all know this thing. Yes, it is a J-shaped organ which is present on the left side of abdomen. Yeah, and also we can say below the diaphragm। Yes, जब हम respiration पढ़ेंगे तब हम diaphragm भी पढ़ेंगे। So it is on the left side of abdomen, or you can say it is on the below the diaphragm also। Now this stomach, students, it contains several branch and tubular glands। बहुत सारे tubular glands इसके साथ इसमें है on the inner surface of the stomach there, and that inner part is called as, what is there? Gastric glands। तो दिस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करते हैं कुछ जूसेस को जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। We will discuss about the gastric glands also। Okay, so remember the gastric juices are secreted by this gastric glands। Now this gastric glands are secreted by the inner lining of stomach। Remember, yes, कहाँ से कौन सीक्रेट करता है? कहाँ सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स? By the inner lining of stomach। If you want, you can write it down all these things। Okay, this gastric juice, now this juice is present now, so this gastric juice contains what? It contains hydrochloric acid, it contains enzyme pepsin, it contains mucus, isn't it? In this way this different things are there in the stomach। Students, food is partially digested। ठीक है, माउथ में डाइजेशन शुरू हुआ ना, स्टमक में फूड पार्शियली डाइजेस्ट होगा, कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं होगा। यस, द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड इन द स्टमक, रिमेंबर। और बाद में स्टमक से कहा जाएगा, इट इज रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। गॉट इट? So exit of food from stomach into small intestine, वो कौन रेगुलेट करता है? It is regulated by muscle जिसको हम बोलते हैं sphincter muscle। Remember this thing। Yes, what is it called? It is called as the sphincter muscles। After that, what happens? This sphincter keeps the opening closed until the food is completely churned up। यानी स्टमक में फूड आ गया इसोफेगस से, उसके बाद में वो फूड को जब तक वो प्रॉपरली चर्न नहीं हो जाता स्टमक में, यस,
तब तक ये जो स्पिंक्टर है ना, इट विल बी क्लोज्ड, ताकि फूड जो स्टमक में है वो इंटेस्टाइन में ना जा सके. Yeah, so it is closed till then. Then it also prevents the backflow or regurgitation of the food from duodenum into the stomach. ये क्या करता है? ये बैकफ्लो, खाने का बैकफ्लो को भी प्रिवेंट करता है. कहाँ से? डियोडेनम से स्टमक में. यानी जब खाना स्टमक से इंटेस्टाइन में चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यस, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है डियोडेनम, तो डियोडेनम से वापस से स्टमक में ना आए, उसका भी ध्यान कौन रखता है? ये जो स्पिंक्टर मसल है वो रखेगा. ये नहीं, दोनों चीज कर रहा है. जब स्टमक में खाना है तो वो खाने को इंटेस्टाइन में जाने नहीं देगा. एक बार खाना इंटेस्टाइन में आ गया तो इंटेस्टाइन से वापस स्टमक में फ्लो होने नहीं देगा. दिस इज डन बाय द स्पिंक्टर मसल. गॉट इट स्टूडेंट्स? इसी तरह का एक और स्पिंक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक स्पिंक्टर. ये कहाँ पर रहता है? ये रहेगा आपका ईसोफेगस और स्टमक के बीच में. यानी ईसोफेगस से जब स्टमक में खाना आ रहा है, उसकी जो ओपनिंग रहेगी स्टमक की, वहां पर एक और स्पिंक्टर है, दैट इज द कार्डियक स्पिंक्टर. यस, एंड दिस इज, आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स. यहां तक समझ में आया? नाउ व्हाट इज इट डूइंग? ये भी क्या करेगा? फूड का बैकफ्लो प्रिवेंट करेगा, यानी स्टमक से खाना फिर से ईसोफेगस में नहीं जाना चाहिए. Now, one more important thing I would like to tell you, that the food in the stomach is called as chyme. This is many times asked. स्टमक में जो खाना रहता है उसको हम क्या बोलेंगे? हम फूड नहीं बोलेंगे, हम उसको काइम बोलेंगे. Yes, and this chyme nearly remains for 3 hours in stomach. ठीक है, तीन एक घंटे के लिए स्टमक में खाना रहता है, इसको हम बोलते हैं काइम. when it comes when it is in your mouth ना students, जब हम खाना हमारे माउथ में रहता है, जब वो मिक्स हो जाता है, हम उसको बोलते हैं बोलस. what we call it as bolus. but when this bolus comes in the stomach, now we call it as a chyme. Remember this thing. Got it? So this was about the stomach. After that it comes your small intestine. Now small intestine is the longest part of your alimentary canal. Alimentary canal का longest part है, nearly I can say 6.6 meter long. Yes, in adult, एक adult human रहेगा उसमें ना generally 6.6 meter long रहता है. लेकिन उतना long तो दिखता नहीं है. क्यों? Because it is highly coiled. Yes, it is very coiled. It is because of that extensive coiling there, it fits into the कॉम्पैक्ट स्पेस. छोटी सी जगह में इतना 6.6 मीटर लॉन्ग ट्यूब आ जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉइल फॉर्म में रहता है. या स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का कंप्लीट डाइजेशन होता है. सो द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस और इट अकर्स in small intestine. Again I am starting. In the mouth, the digestion of the food starts, specifically this digestion of starch. In stomach, the food is partially digested. There is no digestion taking place in esophagus, and in small intestine, complete digestion of food takes place. ठीक है? अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, 3 रीजन्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहला है डियोडेनम, देन जेजुनम एंड देन इलियम. इन स्टमक के बाद जो आता है पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, द फर्स्ट इज अ डियोडेनम, बाद में जेजुनम, देन इलियम, और इलियम को लग के क्या आ जाएगा, उसके बाद शुरू होता है लार्ज इंटेस्टाइन. गॉट इट स्टूडेंट्स? So complete digestion of food takes place in these regions of the small intestine that we have seen. Now, ये digestion कैसे होता है और बाद में क्या होता है? The inner lining of small intestine. This is also interesting. Small intestine की जो inner lining रहती है, specifically ileum वाले part में, yes, वहां पर finger like projections रहते हैं कि इस तरह से. Suppose ये lining है ना, if this is the lining of an intestine, so there it will be some finger like projection इस तरह से. Yes, you can say like this.
finger-like projection. And what are they called? We call them as a villi. Yes, they are called as a villi. Yes, villi का काम क्या है? What is the role of this villi? It increases the surface area for absorption. जो खाना digest होता है ना, then when the food is going to be absorbed, for that bigger surface area it would be needed. So this villi helps to increase the surface area for absorption of food. Just remember this thing also. Okay. Now after that you can also see here. Just a minute, sorry. You see this is the villi. You just say this is the lining and here this finger like structures are there जिसको हम बोलते हैं villi. है ना? ये villi में आप ये linings देख सकते हो. Now this blue and red, these are the capillaries. है ना? Capillaries भी रहेंगी, blood capillaries, lacteal भी रहेंगे. So I will discuss this जब हम mechanism पढ़ेंगे ना, when we will see the mechanism of digestion, there we will discuss all these things. Okay, so now just remember that these are the villi which are present on a inner lining of a small intestine, specifically in the ileum part. Got it? Now, the duodenum, if I want to talk about this duodenum, so duodenum, students, it is a proximal part, as I told you, the starting part, and it will receive the secretion from the liver as well as pancreas. So pancreas और liver हमने associated glands या digestive glands की तरफ से लिए, वहाँ पे जो secretion बनते हैं, the secretion that are formed there, they will be coming into the intestine, in the small intestine. In which part? In this duodenum. Yes, so this duodenum, I can write here, it receives secretions from liver and pancreas. Got it? Then after that, the last part that I told you, ileum there. Na? So ileum is along with single cell epithelium. It is narrow. Ileum comparatively narrow भी है. क्यों narrow है? Because so that the movement of the food becomes slower there. जितना धीरे धीरे फूड वहां से पास होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, because this villi are present in the ileum only, isn't it? So absorption of food वहां पर होगा. तो जितना नैरो और जितनी कम छोटी जगह रहेगी तो वहां से फूड जाने को टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, एब्जॉर्ब होने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा, isn't it? So I can say now the digestion and absorption both takes place in the small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है. डाइजेशन तो कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा. Got it? So this was about the small intestine. Now after small intestine, it is the large intestine. Large intestine, look, intestine, yeah, it is just 1.5 meter long. It is shorter, but it is wider. Small intestine is 6.6 meter long, but it is called as a small. Because it is compact, it is placed in a very small place. Yes, and large intestine, actually में large intestine lengthwise छोटा है, but we call it as a large intestine. Yes, it is wider in diameter. Got it? Now this in the large intestine क्या होता है? फूड का डाइजेशन तो सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन पार्ट होता है, जो वाटर एब्जॉर्प्शन बच गया है थोड़ा बहुत, सपोज सम फूड विच इज अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड वेस्ट की तरह बाहर निकाला है स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसमें यदि पानी और है विच कैन बी एब्जॉर्ब, दैट वाटर इट विल बी absorbed again with the help of this villi. They are also present in the large intestine. They help in the absorption of water from the undigested food. ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, जो रिमेनिंग फूड है जो डाइजेस्ट नहीं होगा, दैट मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड, वो एज अ वेस्ट बाहर निकालेंगे. वो कहाँ भेजा जाता है? वो भेजा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में. वो वेस्ट फूड से या अनडाइजेस्टेड फूड से और पानी यदि एब्जॉर्ब कर सकता है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा वहां से, बिकॉज वाटर इज नीडेड बाय द बॉडी, इजंट इट? So this large intestine is also having three parts as a cecum, colon and rectum.
Okay, it is having again three part as cecum, colon and rectum. You can see ये आपका large intestine है. ये पहला part जो है cecum, then ascending colon, transverse colon and descending colon and sigmoid colon. ये second part है colon and the last is your rectum. उसके बाद में आपका anus है. Okay, so this three is the large intestine is divided in this three parts. Remember, in the large intestine, no enzyme is secreted. यहाँ पर कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं होता है. अब एंजाइम नहीं होता है तो डाइजेशन नहीं होगा. देयर विल बी नो डाइजेशन. Yes, mostly the water is absorbed. Always remember. Clear? Now, in the large intestine, you can also see this appendix. Vermiform appendix is present. Yes, from the blind end of the cecum it is there. लेकिन अभी ये appendix it is not, हम क्या बोलेंगे, it is an vestigial organ now, isn't it? This is, we considered it as a vestigial organ जो अभी हमारे लिए कोई काम का नहीं है. It is not of any use. Just एक organ है. It is of no use. So this vermiform appendix, it is from the blind end of the cecum. You can see here, in this appendix, it will be there. Yes, this part. Yeah. Now this undigested food is passed to the anus. Anus में pass होगा through this rectum. Rectum के through anus में pass होगा और anus से ये remove हो जाएगा outside the body. Got it? In this way, this intestine is doing its work. So these are the main part that we have discussed. हमने पढ़ लिया alimentary canal के. Now the next part of digestive system, that is the digestive glands. आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट्स के यूजर्स क्या है एंड व्हाट आर दिस पार्ट्स. या now this is again an important part that we are discussing, that is your digestive glands. First of all, we will discuss the salivary glands. Salivary glands, as I told you, कहाँ पर मिलेगा आपको? Yes, these are the three pairs you can see here. This is a mouth and here the salivary glands will be there. And this, okay, sorry. The salivary glands are the three pairs of, there are three pairs of salivary glands. I can write here, just a minute. Yes. Three pairs of salivary glands. Which are these three pairs? As parotid gland, yes, then submandibular and sublingual. Got it, students? You can see this is a parotid one. ये यहाँ पर रहेगा जो, that is a parotid. Then sublingual, it is here, isn't it? This is the sublingual and this one, ये यहाँ पर जो रहेगा नीचे में आपको दिखेगा that this is a submandibular, यहाँ पर अंदर की साइड में, not this is a, but this is a position. There will be a submandibular, then after that it will be sublingual, and here at this part you can say there will be parotid glands. So these are the three pairs of salivary glands which are present. Yes, so we can say it is in front of and beneath each ear. In front of and beneath each ear. इस तरह से उसका positions रहेगा. Okay, now what are the role of these glands? ग्लैंड का काम क्या रहेगा? ये सलाइवरी ग्लैंड्स, ये जो पैरोटिड है, मैंडिब्यूल, सब मैंडिबुलर है, सबलिंगुअल है. Remember students, if you know the position exactly, sublingual, you can say it is below the tongue. Exact, if you want to see the position, it will be below the tongue. This you can, यहाँ पे देखो, here you can find it out. This is a mouth, ये teeth है, ये tongue है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है. This is a sublingual, isn't it? Submandibular, we can say lying close to the inner side of the jaw, lower jaw के inner side में आपको दिखेगा, isn't it? और parotid तो यहाँ पर है, in front and below the ear you can see that, isn't it? Now, saliva is secreted by the salivary glands. Yes,
So saliva is secreted by the salivary glands, and saliva is what? It is slightly acidic. Remember, saliva secreted by salivary glands. Yes, और सलाइवा इट इज व्हाट इज द एंजाइम इज सलाइवरी अमाइलेज, जो कि रहेगा, लेकिन इसके पहले हम लोग देख लेंगे सलाइवा इज वेरी स्लाइटली, हाउ इट इज देयर, एसिडिक. यस, नियरली उसका जो पीएच रहता है ना, इट इज 6.8, वेरी स्लाइटली, नॉट टू मच. 7 हो गया है ना, इट इज अ न्यूट्रल ना, so बस न्यूट्रल के पास ही है, but it is below it, so that's why we can say it is very slightly acidic. Yes, with I can say 99% of water. उसके साथ साथ उसमें कुछ salts भी रहेंगे, there will be some salts. Yes, some enzyme, which enzyme is present? Enzyme salivary amylase, or remember it is also called as a ptyalin. Yes, and mucus is also there. नियरली स्टूडेंट्स एक दिन में हमारा माउथ 1000 to 1500 ml सलाइवा प्रोड्यूस करता है. Nearly in a day our mouth produces what? How much? 1000 to 1500 ml of saliva. Actually this is sorry, as I told you that when we see some food and our the water comes in our food, it is due to the salivary glands only, isn't it, students? Now the salivary amylase, if I am talking, salivary amylase or ptyalin, yes, what it is doing, it converts starch, sorry, sugar, I will write here. Actually, just a minute. We can make, or we can write it down in the name only, just. And don't worry about all these things. If you want, you can get the notes properly from the when you download the app, है ना. आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे. So salivary amylase converts what? It converts the starch into sugar, and that sugar we can say maltose. Yes, at a pH normally 7 pH पे होगा. So we can say that the digestion starts in the mouth. Yes, with the help of enzyme salivary amylase. Yeah, but it will not complete digestion, it will be an incomplete digestion. So I can write here that the starch in a mouth, in the presence of enzyme, it is converted to maltose. And what is the enzyme? The enzyme is amylase, salivary amylase. Yes, or you can also write here ptyalin. Yes, ptyalin or salivary amylase. I hope this is clear. You know, जब हम चावल खाते हैं, yes, when we eat some boiled rice or like that, and we chew it completely, when we chew a lot of their rice, and you can do this thing. आप है ना, चावल लो, boiled rice you take, and you chew continuously in the mouth and try to sense the taste, how it tastes. You will find that it is tasting little bit sweet. वाई डिस, क्यों है, क्यों थोड़ा सा मीठा लगने लगता है चावल जब हम उसको कंटिन्यूसली चबाएंगे तो मुंह में? क्योंकि स्टूडेंट्स, जो स्टार्च पार्ट है चावल का, वो डाइजेस्ट होना शुरू हुआ है, वो कन्वर्ट हो रहा है माल्टोस में. व्हाट इज इट? माल्टोस इज अ शुगर. Yes, and that's why we feel that it is sweet. Got it, students? That means the digestion is starting there. Got it? So this was about the salivary glands. Now the next is your
ओके, वी विल गो विद द फंक्शंस ऑफ सलाइवा ऑल्सो। थोड़ा सा फास्ट लेते हैं, ये सारे आपको जस्ट लर्न करना है, समझना है, नॉट लर्न आई विल से, और जस्ट गो विद दैट, अंडरस्टैंड इट, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो। सलाइवा क्या करता है, वो मॉइस्चन करता है फूड को, यानी गीला करता है, ल्यूब्रिकेट करता है, चिकना करता है, ताकि फूड इजीली डिसॉल्व हो जाए और बाद में च्यू भी इजीली कर सके फूड को टीथ, और बाद में स्वेलो हो जाए, isn't it? Then it helps to form bolus। मैंने कहा ना कि जो फूड माउथ में जब फूड फॉर्म होता है, जब फूड का ऐसा गोला बन जाता है, isn't it? उसको हम बोलस बोलते हैं। जबकि यही गोला जब स्टमक में चला जाएगा, हम उसको काइम बोलेंगे। Got it? So it helps to form bolus, and then bolus is swallowed easily. Then सलाइवा और क्या करता है, सलाइवा मुंह को साफ भी रखता है। कैसे? वो जो यदि हमारे मुंह में कोई जर्म्स यदि आ जाते हैं, बैक्टीरिया, एनी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जर्म्स, yes, it cleans। We have the watery mouth there, yes, you can clean it from that also, isn't it? So that you can prevent the tooth decay। Then the enzyme which it is having, saliva के पास enzyme रहता है, salivary amylase, which helps in the digestion। Yes, it dissolves food particle again। Saliva dissolves a food particle to stimulate the taste bud। जब फूड पार्टिकल प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाएंगे तभी तो वो टेस्ट बड स्टिमुलेट होगा और हमको टेस्ट का समझ में आएगा कि कैसा टेस्ट है, isn't it? Also, the less water content in the saliva। यदि सलाइवा में मैंने जैसे बताया 99% ऑफ वाटर है ना सलाइवा, यदि ये वाटर कंटेंट कम हो जाएगा तो हमको सेंसेशन आएगा कि हमको प्यास लगी, वी फील थर्स्टी, या एंड वी विल ड्रिंक द वाटर। सो इन दैट वे क्या करता है, वो हमारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देता है, पानी का बैलेंस रखता है। Got it, students? So these are the functions of saliva। Now the next gland is the gastric glands। gastric glands कहाँ पर है, मैंने बताया था inner lining of stomach, है ना? So gastric glands are present in an inner lining of stomach, you can say। So I will write here, it is there on an inner lining of stomach। Now क्या है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में, इट इज अगेन देयर आर दीज आर द थ्री ट्यूबुलर ग्लैंड्स। ये भी थ्री ट्यूबुलर ग्लैंड्स है, यस, जो कि स्टमक के इनर लाइनिंग पे फाउंड करते हैं। एंड वो क्या सीक्रेट करते हैं, दे सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट किया जाता है यहाँ। गॉट इट? गैस्ट्रिक जूस में क्या रहता है, गैस्ट्रिक जूस में आपको HCl मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, देन एंजाइम पेप्सिन इज देयर, as well as mucus is there, isn't it? Now you can see here this HCl, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, what is the role of hydrochloric acid, anyone? अब this is an acid, दैट मीन्स स्टमक में मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम रहेगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सबसे पहला काम है दैट इट मेक्स एसिडिक मीडियम इन स्टमक। फॉर क्यों होना एसिडिक मीडियम, बिकॉज दिस मीडियम इज नेसेसरी फॉर प्रोटीन डाइजेशन। इन स्टमक में जो एंजाइम है ना प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए, वो तभी काम करेगी जब मीडियम कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा। गॉट इट? इसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिकॉज वो एसिड है, वो क्या करेगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हो गए फूड के थ्रू, उसको किल करेगा। यस, इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। गॉट इट स्टूडेंट्स? या also this HCl, it activates enzyme पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन एंजाइम को एक्टिवेट करता किसमें, पेप्सिन में, यानी पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है,
पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है और पेप्सिन हेल्प करेगा, जैसे ये वाला पेप्सिन है ना, इसको एक्टिवेट करने का काम भी कौन कर रहा है, HCl, यस, so that the protein digestion can take place. पेप्सिन का रोल क्या है, अगेन एज आई टोल्ड यू, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यस, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, इसमें डाइजेस्ट करेगा इनटू पेप्टाइड्स, यस. देन व्हाट इज द रोल ऑफ दिस म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, it protects the wall of stomach फ्रॉम द एसिडिक मीडियम. HCl का जो एसिडिक मीडियम रहेगा, बहुत ज्यादा HCl रहेगा, तो क्या है, उससे हमारे स्टमक को भी तो खतरा हो सकता है. इट इज हार्मफुल फॉर अस बिकॉज इट कैन डैमेज द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज एसिड. जब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकता है, तो वो हमारे बॉडी के सेल को भी तो डैमेज कर सकता है. तो उसको बचाने का काम कौन करता है, म्यूकस. म्यूकस अपनी एक लेयर बना लेता है स्टमक की लाइनिंग पे, यस. तो जो एसिड स्टमक के अंदर रहेगा, वो डायरेक्टली लाइनिंग, स्टमक लाइनिंग को, सेल्स को टच नहीं कर पाएगा, अफेक्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ दिस लेयर ऑफ द mucus. So in that way it helps or it protects the wall of stomach from the acidic medium of the HCl. I hope this is clear, students. Now there is one more enzyme called as a lipase. Gastric lipase भी होती है. This gastric lipase, it acts on a milk fat. याद रखो. Yes, gastric lipase, it acts on a milk fat. Clear? So, and one more important thing, if it is there, just a minute. I will write here only, we don't have space. आप ये देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, ये सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं. इसमें से ये देखो parietal cells, there are different cells. ये जो parietal cells है ना, you can write down all these things. It secretes the hydrochloric acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट कौन करता है, ये parietal cell, यहाँ पर वो सीक्रेट होता है. इसके साथ साथ वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी सीक्रेट करता है, एंड इट आल्सो सीक्रेट्स द इंट्रिंसिक फैक्टर. नाउ इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन करती है हमारी बॉडी, विटामिन B12 हमारी बॉडी नहीं बनाती है, यस, इट इज एन एसेंशियल वन. So when this vitamin B12 is going to be absorbed, in this absorption, this intrinsic factor helps. Just इतना आप ध्यान में रखो. I am telling you little bit more there. This is just if you are having interest, you can note all these things. Then mucus को secrete कौन करता है, म्यूकस को सीक्रेट ये म्यूकस नेक सेल भी करते हैं और म्यूकस सेल भी करते हैं. ओके, अब ये जो पेप्सिनोजन जो सीक्रेट हुआ है, उसको सीक्रेट कौन करता है, उसको सीक्रेट चीफ सेल करते हैं. Yes, the chief cell secretes the pepsinogen as well as gastric lipase. I told you what is the role of gastric lipase. They act on milk fat. Remember. Yes, gastric lipase act on the milk fat. Clear? और जो जी सेल है ना, जी सेल हार्मोन सीक्रेट करता है, ये हार्मोन का नाम है गैस्ट्रीन. नाउ नो नीड टू गो फॉर दिस बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हार्मोन्स. हम अभी डाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम ये नहीं पढ़ेंगे. जस्ट आप लिख सकते हो कि जी सेल सीक्रेट करता है हार्मोन गैस्ट्रीन. गॉट इट स्टूडेंट्स? So this is the gastric glands, and there are different cells and their different roles also I told you. So one more thing, now the medium is acidic, है ना, यहाँ पर एसिडिक मीडियम है. तो डाइजेशन ऑफ स्टार्च, इट इज जनरली प्रिवेंटेड इन स्टमक. यस, इट इज प्रिवेंटेड इन स्टमक. So here what we can say, or we can write here in the stomach, you can make it here. I just write in a short way, students, like पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है. यस, this HCl helps to convert pepsinogen into pepsin, है ना, जो कि एक्टिव रहता है. अब ये पेप्सिन को कन्वर्ट, ये जो प्रोटीन रहेगा, जो प्रोटीन हमारे फूड में आएगा, प्रोटीन वाला फूड जो रहेगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स.
और कौन करेगा ये? इट विल बी डन बाय द एंजाइम पेप्सिन। ये जो पेप्सिन एक्टिवेट हुआ है विद द हेल्प ऑफ HCl, वो क्या करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स। क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू कैन राइट इट डाउन स्टूडेंट्स, दैट देयर इज वन एंजाइम रेनिन। यस, RENNIN। रेनिन जो है वो सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस, सीक्रेट करता है एक और एंजाइम को जिसको नाम है रेनिन। इसका मैं आपको बता रही हूँ व्हाट इज द इट्स रोल। रिमेंबर स्टूडेंट्स, देयर इज अ प्रोरेनिन, इट इज अगेन इनएक्टिव, अगेन विद द हेल्प ऑफ HCl वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिसको बोलते हैं हम रेनिन। अब ये जो मिल्क प्रोटीन बनेगा, जो मिल्क प्रोटीन, जो दूध के जो प्रोटीन्स रहते हैं, यस, और हम उसको बोलते हैं सीजिन भी बोलते हैं, isn't it? So this is digested by this renin, yes, into paracesin. I hope this is clear. So this is the role of renin. So this is responsible for only digestion of the milk protein. Remember, got it? So this was about the gastric gland. Now after that, coming to the next part, that is a liver. Liver एक organ है ना? लीवर या फिर हम उसको बोलते हैं ग्लैंड है। तो ग्लैंड यदि मैं बात करती हूँ, सो इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? लीवर है। 1500 ग्राम्स नियरली। गॉट इट स्टूडेंट्स? रेडिश ब्राउन कलर का आपको दिखेगा एब्डोमेन के ऊपर की साइड में, थोड़ा सा जस्ट बिलो द डायफ्राम। लीवर सीक्रेट करता है बाइल। यस, उसका मेन काम क्या है? एक तो सीक्रेशन ऑफ बाइल, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इट इज डूइंग। बाइल एक येलोइश ग्रीन कलर का फ्लूइड होता है। ओके ये जो बाइल सीक्रेट होता है लीवर में, बाद में ये बाइल सीक्रेट होने के बाद में स्टोर कहाँ होता है? स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। आई टोल्ड यू गॉल ब्लैडर का रोल, आई टेल यू। यस, सो बाइल इज टेम्पररीली स्टोर्ड इन अ गॉल ब्लैडर, और बाद में फ्रॉम देयर इट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द डिओडेनम थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट। मैंने बात बताया था ना जब हम लोग बात कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन की, कि लीवर और पैनक्रियास से सिक्रीशन डिओडेनम में आता है। तो कौन सा सिक्रीशन आएगा? ये जो बाइल है गॉल ब्लैडर में स्टोर, लीवर में फॉर्म होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा, और फिर वहां से वो कहाँ जाएगा? वो डिओडेनम में जाएगा जब भी उसकी जरूरत रहेगी तब। Got it? So this is about the bile there. More about that if we want to see, you can see here. Yeah. This is, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये तो पैनक्रियाज है, और ये आपका डिओडेनम पार्ट है। यस, दिस इज अ पार्ट ऑफ डिओडेनम। एंड यहाँ से लीवर से ये डक्ट आ रहा है जिसको हम बोलेंगे हिपैटिक डक्ट स्टूडेंट्स। ये आपका गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से जो डक्ट रहेगा इसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट दोनों मिल जाएंगे और ये कॉमन बाइल डक्ट बन जाएगा। कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू ये जो बाइल है, देखो लीवर से भी ताज़ा ताज़ा जो बना होगा वही ज़रूरत रही तो वो यहाँ से आएगा, स्टोर्ड वाला यहाँ से रहेगा, एंड दे विल एंटर इनटू दिस डिओडेनम। सिमिलरली पैनक्रियास से भी जो पैनक्रियाटिक जूस बनते हैं, दे विल ऑल्सो एंटर टू द पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये दोनों डक्ट देखो, कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट, यहाँ पर जब डिओडेनम में आते हैं वो सेम हो जा रहा है, सिंगल डक्ट हो रहा है। वो दोनों रास्ते में मिल जाएंगे, एंड इन द डिओडेनम दे विल एंटर एज अ सिंगल डक्ट। गॉट इट? सो दीज आर द पैनक्रियास, यू कैन सी। So remember bile का काम क्या है? Now we will see what is the role of bile there. Bile contains, students, bile juice and bile pigment. Remember this. Just a minute. Oh, sorry. Yeah, we can write here that bile contains what? It contains bile juice and bile pigment. I know today's class is little bit big. आज बहुत लंबा क्लास जा रहा है, but it is necessary to take in one go.
इफ पॉसिबल आप उसको 2 बार 3 बार देखो, ब्रेक ले लेके देखो स्टूडेंट्स, एंड बट बी श्योर दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगेन इफ यू हैव एनी डाउट, आपको कुछ भी डाउट होता है, यू कैन ऑलवेज write in the comment box. I'll definitely try to solve that doubt for you all. Got it, students? Yes. Now, bile contains bile juice as well as bile pigment. Bile juice specifically do not contain any enzyme. Got it? It is alkaline again. It is alkaline. Yes, and helps in digestion and absorption of what? Fats. Yes, helps in digestion and absorption of fats. कैसे? ये जो बाइल है ना, ये फूड को क्या करेगा? एल्कलाइन बनेगा। बाइल मेक्स द फूड एल्कलाइन। यस, स्टमक से जो फूड आया वो कैसा था? एसिडिक था, बिकॉज देयर वाज HCl. यस, पेप्सिन यूज्ड टू वर्क ऑन एसिडिक मीडियम, बट in the intestine the food it will act on an alkaline, वहां पे alkaline environment होता है। तो ये जो बाइल आता है आपका इंटेस्टाइन में, ये जो फूड आपका एसिडिक फूड स्टमक से आ रहा है काइन, इट विल मेक इट एल्कलाइन। सबसे पहले वो एल्कलाइन करेगा। क्यों? because the pancreatic enzymes or the enzymes that are present in the intestine, they will work only in alkaline medium. उनको काम करने के लिए एनवायरनमेंट कैसा होना? एल्कलाइन। दैट्स व्हाई बाइल विल फर्स्ट मेक द फूड एल्कलाइन। यदि फूड एल्कलाइन नहीं हुआ तो कोई भी एंजाइम उस पर वर्क नहीं करेगा। सो बाइल का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इट इज मेकिंग द फूड एल्कलाइन। ओके, एंड जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, यस, व्हाट विल इट डू? द बाइल सॉल्ट्स, they will break the large fat molecules, break large fat molecules, और फैट को ब्रेक करके क्या बनाएगा? इट विल ब्रेक इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। यस, यानी बड़े जो बिगर फैट मॉलिक्यूल्स, इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स बाय दिस बाइल सॉल्ट्स। स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ब्रोकन डाउन होने से क्या हो जाएगा? सो दैट जो एंजाइम उस पर एक्ट करेगा वो एंजाइम के लिए इजी रहेगा टू एक्ट ऑन दैट। गॉट इट? सो इट इज मेकिंग वो एंजाइम का काम थोड़ा सा आसान कर रहा है। इज दिस मच क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक समझ में आया? यू कैन सी हियर द कलर ऑफ बाइल। जो बाइल का ये ग्रीनिश कलर बताया, दिस इज ड्यू टू द पिगमेंट्स कॉल्ड एज अ बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। दो पिगमेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये दोनों पिगमेंट कैसे बनते हैं? दिस आर बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ डेड एंड वर्न आउट रेड ब्लड सेल्स। आरबीसीज जो होते हैं ना, वो जब डैमेज हो जाते हैं, जब वो ब्रेक होने शुरू होते हैं, व्हेन दे आर गोइंग टू डाई देयर, यस, सो आफ्टर देयर डेथ, यस, दे फॉर्म, वहां से कुछ पार्ट्स, हीम अलग से हो जाता है ना, ग्लोबिन अलग से आ जाता है, उसके साथ साथ ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन भी फॉर्म होते हैं। यस, सो रिमेम्बर, इनके का इसके का ये दो पिगमेंट के कारण ही बाइल का कलर ग्रीन है। नाउ दिस बाइल हेल्प्स टू मेक द फूड एल्कलाइन। अब ये फूड को एल्कलाइन बनाने में मदद कैसे करता है? क्या? क्योंकि इसके पास क्या होता है? इट इज हैविंग अ सोडियम बाइकार्बोनेट। यस, बाइकार्बोनेट है, तो ये क्या करेगा? इट विल न्यूट्रलाइज द एसिड कंटेंट ऑफ द फूड। फूड का जो एसिडिक कंटेंट है उसको न्यूट्रलाइज करेगा और द फूड विल बिकम एल्कलाइन। Clear students? So what can we say here? While again I am saying there is no enzymes on in bile, okay, no enzymes are present there. But what happens here? In the bile, fat
Yes, they are converted or they form emulsified. Yes, and this is done by what? Emulsification कौन करता है? Emulsification बाइल करेगा, यानी जो बड़े हार्ड फैट मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसको छोटा कर देगा, सेल्यूबल फॉर्म में कर देगा. ओके, एज वेल एज जो एसिडिक काइम है, acidic chyme which comes from a stomach, yes, it will be also converted into alkaline chyme. Yes, and this is also done by the bile. तो bile का ये दो काम हो जाए. I hope this is clear. Or once this fat are broken or they are emulsified, they are made broken into smaller globule. Yes, क्यों? क्योंकि एंजाइम उस पैक करेगा और वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा. और ये कैसे होता है स्टूडेंट्स? दिस इज डन बाय रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन ऑफ फैट. यस, कैसे होगा? फैट्स का सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर दिया. क्लियर? आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज द पैनक्रियास. पैनक्रियास क्या सीक्रेट करता है? पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है. व्हाइट कलर का ग्लैंड है, स्टमक के पीछे मिलेगा. गॉट इट? पैनक्रियाटिक जूस में अब एंजाइम सीक्रेट करेगा. बाइल अगेन नो एंजाइम, रिमेंबर. ये तो पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स एंजाइम कॉल्ड एज amylopsin. You also we know it with the name of pancreatic amylase. Yes, दूसरी एंजाइम है ट्रिप्सिन और स्ट्रिप्सिन. ये तीन एंजाइम सीक्रेट करता है कौन? पैनक्रियाटिक जूस. ओके, now this trypsin is first secreted as inactive trypsinogen. ट्रिप्सिन पहले से ट्रिप्सिन नहीं रहती है, जैसे पेप्सिनोजन था ना पहले, उसी तरह से पहले ट्रिप्सिनोजन रहेगा. ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट किया जाएगा ट्रिप्सिन में. कौन करेगा? एंजाइम यूर इज एंटेरोकाइनेस. और एंटेरोकाइनेस को कौन सीक्रेट कर रहा है? एंटेरोकाइनेस को डिओडेनम सीक्रेट कर रहा है. गॉट इट? सो ऑल दिस थिंग इज interrelated, एक दूसरे के साथ related है all these things, so you should remember this thing. I'll tell you a little bit more about the pancreas, students. As I told you that trypsin is first inactive now, so we can write here that trypsinogen is activated to trypsin. Yes, the enzyme is what? Enzyme is enterokinase. वी विल राइट, हम एंजाइम को अलग ना कलर से लिखेंगे, यानी अभी वो याद रहेगा आपको कि ये एंजाइम है ना. ये इनएक्टिव फॉर्म था और ये हो जाएगा आपका एक्टिव फॉर्म. यस, अब ये ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन एक्ट्स ऑन प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स टू फॉर्म द स्मॉलर. तो आई कैन राइट हियर, आई चेंज द कलर अगेन. या, नाउ इफ द प्रोटीन्स आर देयर, yes, proteins, on this proteins this trypsin will act and it will convert into what? It will convert into peptides and amino acid, है ना? This is done by the enzyme trypsin. गॉट इट स्टूडेंट्स? इतना समझ में आया? उसके बाद में यदि मैं बात करती हूँ सेकेंड एंजाइम, वी हैव सीन amylopsin or pancreatic amylase. What it will do? This pancreatic amylase, it will break the starch. Yes, I can write, यहाँ पे लिख देंगे breakdown of starch. starch को convert करेगा किस में? sugar में. Yes, it will convert starch into sugar. I hope this is clear. Then the enzyme, there is one more enzyme is there, that is trypsin. trypsin को हम lipase भी बोलते हैं. So what it will do? It will break fats into fatty acid and glycerol. Yes, fat into fatty acids and glycerol. I hope this is clear. So if you want, I will write it down in the way, just taking time, that's why I'm not writing. So I will write it down here. If I want to write fat, see,
Fats are broken down by trypsin into fatty acid प्लस ग्लिसरॉल. स्टूडेंट्स आप इस तरह से, आप यदि आपकी कॉपी में भी लिखोगे ना, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन द सेंटेंसेस, if you will write this like this, it would be more easier to understand for you. Okay, बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा. तो हम पेनक्रियाटिक अमाइलेज भी बोलते हैं. जैसा सलाइवरी अमाइलेज था ना, वो भी स्टार्च का ब्रेक डाउन करता था. Same thing is done by this also. Okay, I have written just we have to write the equation now. So yeah, I'll write here starch is broken down into sugar. Got it, students? यहाँ तक समझ में आया? Yeah. So the enzyme that we will write here, it is your starch into sugar, that is amylase, pancreatic amylase. And fats into fatty acid, it is done by your trypsin. It is nothing but your lipase, है ना? Trypsin is nothing but the lipase. ये lipase ही है. Got it, students? Now with this, you also write it down one thing, that this pancreas, this is pancreas, na? So pancreas also secretes two hormones. These are the enzymes. So pancreas secretes enzymes and hormones. दोनों secrete करता है. Hormones कौन से secrete करता है पता है? Hormones like insulin. अपने डायबिटिक पेशेंट्स के बारे के लिए इंसुलिन पड़ा होगा, है ना? इंसुलिन एज वेल एज व्हाट अनदर हार्मोन इज ग्लाइकोजन. ये दोनों हार्मोन को भी सीक्रेट करता है. सो हम बोल सकते हैं कि पैनक्रियाज हैज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन. यस, पैनक्रियाज हैज बोथ exocrine and endocrine function. That means hormones भी secrete करता है as well as enzymes भी secrete करता है. I hope this is clear. Yeah. And again, one more remember thing, bile as well as the pancreatic juice, they both enters the duodenum by a common duct. यदि क्वेश्चन में आएगा तो you should write that they will enter by a common duct only. I told you in that the previous figure मैंने आपको बताया था, है ना? So this was about the pancreas. Now the next is the intestinal gland. These intestinal glands also secrete, students, I can write here directly, it secretes intestinal juice. Yes, they secretes intestinal juices. Intestinal juices. Yes, and this intestinal juices contains amylolytic, proteolytic as well as lipolytic enzyme. That means the enzymes for किस लिए amylase, that means breakdown of starch के लिए enzyme रहेंगे, protein breakdown के लिए रहेंगे as well as fat breakdown के लिए रहेंगे. Okay, इसके साथ साथ एंजाइम्स के साथ साथ म्यूकस भी रहेगा. सो इट कंटेन्स सीक्रेट्स इंटेस्टिनल जूसेस हैविंग एंजाइम्स एंड म्यूकस. गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ यू कैन राइट इट डाउन. लाइपेज जो रहेगा, ये लाइपेज क्या करेगा? इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. The different enzyme I am directly writing here, fatty acid plus glycerol. उसके बाद में आपका पेप्टाइड्स को कन्वर्ट करेगा अमाइनो एसिड में. वो कौन करेगा? पेप्टाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड. अगेन एन एंजाइम इज रिक्वायर्ड. गॉट इट? देन maltase is converted to maltose. Or sorry, maltose, I will say that just I will write here
maltose, again क्या आना चाहिए? I am making mistake. माल्टोस कौन कन्वर्ट करेगा, किस में जाएगा? Yes, students, maltase is there. So this maltose, it will be converted into glucose. Yes, similarly जो lactose रहेगा, lactose convert करेगा glucose और galactose में. Just remember all the, ये सारी चीजें कौन कर रहा है? Intestinal glands, okay? Then there will sucrase also, na? Sucrose is converted into glucose and fructose. Yes, और ये कौन से एंजाइम्स काम कर रहे हैं इस पे? फैट्स को कन्वर्ट करने में इनटू फैटी एसिड एंड ऑल. इट विल बी द लाइपेज. देन पेप्टाइड्स इनटू अमाइनो एसिड. व्हाट इज इट? इट इज एरिप्सिन. Yes, maltose into glucose, it is maltase. Lactose into glucose and galactose, it is lactase. And this is sucrase. Sucrase is also called as students invertase. आप invertase के नाम से उसको ज़्यादा पहचान. Yeah. So this invertase, it will split the sucrose into glucose and fructose. Lactase splits lactose into glucose and galactose. Maltase converts the maltose into glucose. Ellipsin converts peptides into amino acid, and lipase converts fats into fatty acid and glycerol. So these are about the intestinal glands. So these all together now, ये सारे मिलाकर क्या बना रहे हैं? Digestive system. So we have discussed all the parts of the digestive system. हमने सारे digestive system के parts पढ़े, उनके role पढ़े, वो किस तरह से digestion में help करता है, that also we have discussed. I hope you understood each and everything that we have discussed. In the next class, we will see the mechanism of digestion. किस तरह से ingestion होता है, किस तरह से digestion होगा, किस तरह से absorption होगा, किस तरह से assimilation होगा और कैसे egestion होगा. All these things we will discuss in the next class. So be there, students. Yes, till then all of you, bye bye. Thank you a lot for attending the class. Again, I will say, just try to watch the class. If not possible, a complete class at a time. थोड़ा थोड़ा बीच बीच में देखो, एक एक दो दो पार्ट देखो. ट्राई टू मेक योर नोट्स, रीड द चैप्टर ऑल्सो. अपने आप आपके नोट्स बनाओ और इसी तरह से आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर करो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यदि आपको ये समझ में आ गया, आपको हायर क्लासेस में और इजी पड़ेगा टू नो अबाउट द all the systems of the human body, isn't it? So thank you, students. All the very best for your studies and keep learning till we meet in the next class. Once again, यदि आप लोगों को अर्थ एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है तो आप प्ले स्टोर में जाके आप उसको अर्थ एकेडमी ARTH अर्थ यू कैन डाउनलोड दिस. और यू कैन ये आप लिंक आप देख लो, ये लिंक टाइप करके भी आप वो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो. Why to download? Because you know that there you will get a complete course, yes, with each and every topic, all the video lectures. उसके साथ साथ आपको notes as well as the question answers, the textbook questions, the extra questions, the test, everything you will get there with some live sessions also. Okay, so I hope you will join soon. And yes, if you have not subscribed, please subscribe and share with your friends also. Okay, till then, all of you, bye bye, take care, see you all, bye.